On the first day of this trek, you stay at a village called Rumzu, wherein you get a glimpse of the journey for the next few days. The scenic view from the rooms is all the energy booster you need to get both your mind and body going for this trek. Here, in order to get acclimatized, the participants go for an hour-long walk around the village. Day 2 consists of a short ride to Kanol and a trek from there on, which is extremely pleasing to the eyes. तो हमारा देवतिब्बा का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है और इधर से 3 to 4 आवर्स का जर्नी है, तो ऐसे नज़ारे देख लो। फर्स्ट बेस कैंप इज़ लाइक half an hour far from this point, so it's been 2 hours since we started from the dam and let's see how it goes. बारिश बहुत है, पूरे भीग गए हैं सब। देखते हैं, मिलते हैं कैंप में डायरेक्ट। Although the trek to the campsite Chika is short, the weather here is extremely unpredictable with bouts of rain here and there. तो टेंट में पहुंच गए हैं, हाथ पैर पूरा जम गया है, कैसे पकड़ रहा हूँ समझ नहीं रहा। पूरा गीला, गोबर मिट्टी सब कुछ है। इसके नीचे पोंचो रखा है, मैट के नीचे, उधर नीचे रेनकोट रखा है। सर्वाइवल चालू है। By end of the day, you find yourself surrounded by the beautiful valley, and suddenly you realize you have embarked a journey which you will be remembering for the rest of your life. From Chika, you move towards your next base camp, which is Seri. You walk along a river with soothing sound of gushing water, which makes the journey worthwhile. Seri is a beautiful campsite with majestic view of snow-capped mountains and snow-covered rocky terrain. Seri is undoubtedly the most beautiful campsite of the whole trek. It is our last base camp before the trek to the Deotibba base camp, and hence it is necessary to fuel yourself with a hearty meal for the long and tiring journey ahead of you for the following day. So good morning, the weather is so beautiful. Right now it's 9 AM and we are leaving for the Deotibba base camp. We decided to go directly from this place to base camp because there are some people who are gonna quit on the way and are gonna come back with one of the leaders. So yeah. Along with an early start, with steep trails and dubious weather, this trek marks an actual test to your endurance. The peaks of Deotibba and Indrasan are visible on your route. This looks just like रूपिन पास ट्रैक। ये बर्फ़ नीचे का नहीं होता तो सेम दिखता है। इधर 3 स्टेप्स है रूपिन पास में एंड इधर से ऐसे जाते हैं। नॉस्टैल्जिया। इतना ही थिक लेयर है। हाफ ऑफ आवर ग्रुप मेड इट टिल हियर। अभी बहुत 60 डिग्रीज का
चढ़न है। ये देखो मस्त वाटरफॉल है। गोला फ्लेवर एनीवन? कड़क। बाप रे बहुत स्टीफ है। फर्स्ट टाइम इतना स्टीफ चल रहा, मज़ा आ रहा है। अभी हम हैं 3980 मीटर्स पे। फाइनली दैट डिफिकल्ट पैच हैज बीन कवर्ड एंड अभी हाइट है 4065। ये जो खुशी है and satisfaction. Level 4000 up. 4th trek in Himalayas in this month. Not a joke, guys. Done by this boy. सबमिट हो चुके हैं, थोड़ा सा फोटोज़ वीडियोस ले चुके हैं बट अभी मौसम ख़राब हुआ है तो हमें चलना चाहिए बिकॉज नो मस्ती विद माउंटेन्स। पर डिसेंड कर रहे देखते, तो आप सनग्लासेस से देखो तो ये पूरा फ्रेश नो दिखता है और ये पीला पीला दिखता है। लेट्स ट्राई इफ द कैमरा डज द जस्टिस। The hardest climb gives you the most beautiful views, and standing atop Deotibba base camp at a height of 14,700 feet gives you a glimpse of the same. At this height, the weather can take a U-turn anytime, and the weather can get really challenging. You can experience mild headaches and feel nausea, which could be symptoms of altitude sickness. Within few minutes, the bright sunny day could turn into scary snowstorm and hailstorm. You need to be prepared mentally to face such extreme conditions. Keep yourself insulated with appropriate clothing. सीरियसली बोल रहा, बहुत ज्यादा दिख रहा है। दिस इज एपिक। आई can't believe I'm experiencing this kind of hailstorm. Truly blessed with life. Full snowstorm, hailstorm, rainfall सब हो रहा है अभी। नाक जम गया, पूरा हाथ जम गया, पूरे सब बॉडी जम गई है। मज़ा आ रहा है। तो इधर तो देख रहे कुछ नहीं था, इधर पता है कुछ नहीं, और अभी देखो मस्त बर्फ गिरी है। बाय हार्ड, बहुत हार्ड। एंड दिस इज द सिचुएशन आफ्टर लाइक 5 मिनट्स। हमने मस्त मैगी खाया, चाय पिया एंड सब सॉर्टेड है एक नंबर। After this, you descend towards your initial base camp's area, where you enjoy an alluring sunset paired with a hot cup of tea. Your last day consists of descent through the same trails to Kanol, from where you take a ride to Manali for your departure.